Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. पिछले 3 दिन से डोर टू डोर जो रह गए हैं उनके लिए हम डोर टू डोर ड्राइव शुरू किया हमने। बुनियाद तो बुझ चला हिली एरियाज तक वैक्सीन टूरिस्ट कि ये सारा हॉट टू रीच एरिया है। जो टारगेट था हमारा एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर में कंप्लीट किया। इसके बाद हमने वैक्सीन जो बूस्टर थे उनको भी किया। At the crack of dawn, Tasina Jeelani packs her day's stock of vaccine from a cold chain point at a primary health center at Buniyar in the garrison town of Uri near the LoC, 100 kilometers from Srinagar. आपको वहाँ रेट टेस्ट भी करना है, आपको वहाँ जो पास निकलेगा उनको होम आइसोलेशन के लिए रखना है और आपके साथ MO1 भी है। देखिए ये सारा हॉट टू रीच एरिया है। हमारा 60% पॉपुलेशन जो है सब स्कैटर्ड पॉपुलेशन है। बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं। आपने देखा 2-4 फीट बर्फ़ में भी हमारी टीमें जो हैं सुबह निकलती हैं और शाम तक ये टारगेट के पीछे चलते ही रहते हैं। Soon she sets off with a 2-member team driving through these inhospitable snowed-in mountains for vaccinating people in remote areas. The terrain is slippery and prone to landslides and shooting stones. There is a constant fear of wild animals in the area, but that does not deter them from completing the assigned task. Finally, after an uphill drive for nearly 2 hours, they reach the village of Maidanan with a population of 3,000 people, just 6 kilometers from the border with Pakistan. The team declares their arrival by going door to door, asking people to come for vaccination. यहाँ पे जो लोग जमा हुए थे उनका वैक्सीन हो गया। कुछ बच्चे भी थे अबो 50, उनका पहला डोज हुआ और बूस्टर वाले भी थे उनका भी हुआ। अब जो हम डोर टू डोर जा रहे हैं ताकि हम सबका ये क्लियर कर दें। आज हमारा टारगेट जो हमारा है वो हम पूरा करें। बच्चे भी ये घर पे आ दे और बुज़ुर्ग है कुछ जिनको बूस्टर लगाना है, तभी हम अब डोर टू डोर जा रहे हैं। और बारिश है, बर्फ़ भी हो रही है, इसकी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकते कुछ बुज़ुर्ग, तो अब हम ही उनको डोर टू डोर जाके वैक्सीन करेंगे वहाँ पे। यहाँ से बर्फ़ भी बहुत है, रास्ता क्लियर नहीं है, तो अब हम जाएंगे वहाँ पे उनको वैक्सीन करने पूरी टीम के साथ। The village is poorly connected due to its proximity with Pakistan. Phone lines are down and there is no internet. In the next 4 hours, 40 people come for vaccination, young and old, those who are taking the first shot and those going for the booster dose. समर्स में हमने जो 45 प्लस का जो डोजेज थी वो हमने नाइट और इवनिंग सेशंस में कंप्लीट की, क्योंकि मौसम ठीक था लोगों को चलने में। हालांकि दुश्वारी वहाँ भी थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं इस वक्त बर्फ़ हो भी रही है
और रोडों पे भी बर्फ़ है, पूरी तरह से रोड स्मूथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो टास्क दिया गया है हमारी टीमें जो है निकल रही है, तो कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमने 60% प्लस 15 to 17 एज ग्रुप कवर कर दिया है। अब 40% वो लोग हैं जो या तो घरों में हैं या फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं, जैसे हम इस वक्त जा रहे हैं। हम बिल्कुल समझिए आप बॉर्डर के नज़दीक ही जा रहे हैं, कोराली जा रहे हैं, मैदान जा रहे हैं, सलासन जा रहे हैं। ये 3 जगह ये टीमें जाएंगी डोर टू डोर दोनों को। एक बूस्टर डोज जो है 60 प्लस का, और फिर जो 15-17 रह गए हैं लोग, उनके लिए हमारी टीमें जो हैं डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं आज सुबह। After administering the vaccines in the village, the team sets off for the upper reach of Maidanan on foot. There is no road connectivity to these areas. COVID warriors with their masks and caps on, battling harsh weather. They have to trek through knee-deep snow, braving freezing temperatures. Demonstrating their commitment, these frontline workers are out on a mission to achieve the goal of a COVID-free Kashmir. The weather again starts to pack up. It's snowing already, but they are determined to keep going. The hard task carried out by these unsung heroes who make sure that every person is protected from COVID, no matter where they live in the valley. Today, it is a routine matter to go for hard to reach areas and door-to-door vaccination for vaccinating 15 to 17 years of age and booster dose for 60 years of age. First and foremost, there are already constituted teams, and every team is led by a supervisor. And this time there are mobile teams around about 10 in number, who go in different directions for vaccination, door-to-door vaccinations. Particular today, we sent a team to hilly areas, and 4 vaccinators were there, uploaders 2, and a vehicle and a doctor, and subsequently with them there was a medication for any anaphylaxis or any emergency, and ambulance was there for any evacuation at that time. यहाँ पर है कोई इस वक्त? गुलाम नबी साहब, सर देखें यहाँ पर कोई है घर पे? इधर आ जाओ, आगे की तरफ आप आइए, यहाँ आइए। आपने वैक्सीन किया है मासी? जी कितने लोग डोज लगाए हुए हैं? 3 डोज लगाए। कहाँ पर? सेंटर पर, मैदान में। चलो ठीक है, ठीक। These areas near the LoC have mostly been in news for infiltrating militants. The people living in the border belt were forced to move to safer places at the peak of India-Pakistan hostilities during the 90s, when firing and shelling used to be a daily feature. The November 2003 ceasefire between India and Pakistan brought a semblance of normalcy, leading to their return to their village. A renewed ceasefire agreement between Indian and Pakistani militaries in February 2021 kindled the hope of peace for the people who have borne the maximum brunt of border tensions between the two countries. In population of 80,000, above 18, we have vaccinated 50,000 plus population, first and second dose. Now the drive is for 15 and 17 years of age, which is approximately 5,000, and so far we have achieved 30% of vaccinating 15 and 17 target age. Snow has been very disruptive all the times, and our work done is very slow. And the most important thing is that all these areas are not connected to the internet, and our uploading is always all the time offline, and our vaccinators have to travel by foot kilometers. So that is the main reason that work done is overall low. The team's next stop, Salasan village, 10 kilometers from LoC.
vehicle has broken down in the snow and can't move ahead. आगे स्लिप है ना, अब आगे नहीं जा सकते, आगे तो पैदल जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ से घुमानी पड़ेगी क्योंकि आगे बर्फ बहुत है। But their resolve has not broken. They decide to continue with the vaccination drive by walking the mountains to reach the people right in their homes. For the health workers, though, maintaining a record of vaccinations is a tedious task. The name of each person vaccinated is noted down at the village for making online entries later in Uri. At sunset, the team heads back to their base in Uri. Next morning, they are heading to village Bujthala, close to the LoC. Overnight snow has damaged the road, but their determination remains unshaken. By afternoon, they reach their designated spot. The challenge now is to convince reluctant people to go for vaccination. Many people just don't want to get vaccinated, giving a tough time to the health workers. हम इस टाइम आए हैं बोलने के आ जाओ आप कल फिर करनी दोबारा लिस्ट में ना गए। हाँ, नाम आपका गया लिस्ट में, आपको करना आज भी कल भी आपको करना ही करना है, नहीं लगेगी आपको, आ जाओ। Such encounters with vaccine hesitant people are common during their door-to-door campaigns. जी हम बहुत कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं आपके लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, हमने किया आप भी करो, इसमें फायदा है। सब लोग आते हैं, फिर हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। हमने जहाँ भी देखे कोई पॉजिटिव केस देखा, बारामूला में जैसा बोनियार में या उड़ी में, तो हम लोगों ने वैक्सीन कराया। अड़न लोगन वन कि अम सो प्रॉब्लम गसा, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोगों का ही फ़ायदा है सर, कोई इससे परेशानी नहीं है। अगर सर बीमार सर पे ये पे सर तुलन नखस सह वात बारामूला या बनियार हस्पताल में वात सर। गाइडेंस फैसिलिटी ये कि ताकि सोन बीमार या कह मज बन प्रेगनेंट सह तुलान वात हस्पताल में सर। सर इस वैक्सीन ये सात बूज फलन जाए द्राव पॉजिटिव, उड़ी मज द्राव, बारामूला द्राव, बाकी पहलेपुरा द्राव, इस्लामाबाद द्राव, बिजामा द्राव, पे ये वैक्सीन जरूरी करना हर अकिस पन तोन तो कुन जाए बेठ कर मशवर कि आ यह वैक्सीन ठीक, अम सह प्रॉब्लम कहीं, यह वैक्सीन जरूरी कर यह सू सेफ्टी, अम सह प्रॉब्लम। यमो फर्स्ट त करनो, सेकंड त करनो, थर्ड त करो क्या आज। आज हम सर इस एरिया में आए थे भुजीथाला में। यहाँ पे आपने देखा ना तो रोड है, यहाँ पे हमें सारा दिन चलना पड़ा क्योंकि रोड पे बर्फ है। और हमने सर यहाँ पे अपना जो टारगेट था हमारा एज ग्रुप ऑफ 15 to 18 ईयर में कंप्लीट किया। इसके बाद हमने वैक्सीन जो बूस्टर थे उनको भी किया। हमने ऑलरेडी इनको थोड़ा अवेयर किया था लोगों को कि हम फलाने दिन को आ जाएंगे, हमारी टीम आएगी वैक्सीनेशन के लिए। फिर हमने यहाँ आकर वैक्सीनेशन किया
हम कामयाब रहे अपनी वैक्सीनेशन में। हमारा जो टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया। अभी हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। दिन को हम चलते चलते लगभग 2-3 किलोमीटर चले, पैदल डोर टू डोर गए, लोगों को घर जाकर वैक्सीन किया, क्योंकि सर जो बुजुर्ग थे वो वहाँ पर आए नहीं सेंटर पर। फिर हमने सोचा हम ही जाए इनके पास, इनको वैक्सीन करें। यहाँ पे बहुत खतरा होता है जानवरों का भी। जल्दी से जल्दी हमने निकलने की कोशिश की। जैसा कि आपने देखा अभी 4 बज रहे हैं या 4:30 बज रहे हैं, हम वापस उतरे हैं घर की तरफ, क्योंकि ये गाड़ी की सहूलत तो नहीं है। अब नीचे आके 1-2 किलोमीटर हम चले तो अपनी गाड़ी, हम जो हमारी एम्बुलेंस थी वहाँ तक हम पहुँचे। Precisely to counter that, awareness campaigns have been initiated by the block medical officer to make people conscious about the importance of vaccinations. COVID awareness videos are continuously played at the primary health center. Religious leaders have been roped in to spread the message. Village elders are also chipping in for the awareness campaign. At Buniyar and its adjoining areas, more than 60% people have already been vaccinated. For convincing these nomads who live there, we just convinced first our ashas who are catering that area, and subsequently the PRIs and local imams are senior citizens of that area. They have been very helpful to us in vaccinating the illiterate population as well as the nomads. We have been very lucky that it is the only block who has started the door-to-door campaign for just for awareness as well as vaccinating the people, and this has given definitely laurels at the national and international level. And I can give an instance that Bombay High Court has already instructed the rest of the country why you can't go for vaccination door to door when a small block or when any block in UT in Jammu and Kashmir can do it. We have been able to vaccinate everybody who was eligible in the age group of 18 years and above. If you talk of particularly Boniar, I think their target was around 20-25,000, which they have been able to complete in a very, very commendable manner. We ensure that the vaccine also is delivered to them in a very, very organized manner. As far as their movement is concerned, it is only that we had one bad spell of snow and we deployed all our machinery and manpower to make the roads available for traffic movement. However, there could possibly be some areas which may remain disconnected. Maybe there are few habitations which could not have been connected. But as I mentioned, we have been able to vaccinate everybody, and this target was achieved much before the heavy spell of snowfall that we received this year. From North Kashmir to South Kashmir, at Anantnag, 60 kilometers from Srinagar, awareness camps like these are being held on a regular basis. Health workers are working round the clock, walking for kilometers through snow to reach remote areas. For health workers, there are many obstacles on the way. Motivating people to go for vaccination is just one of them. Vaccination challenge so age group yun sa birwant kun achu tuhindi khidmat khatir government ki taraf yetan BDM salar ki taraf yutan aamiten achu dapanan asasa karo ye successfully program atman chu tuhun taawun zori diun yutan tuhun taawun asman asi suite asi asakam ne yatmas kamyab gachit kiya as toy gasi pannan garan toy wuchu panan yim lakat bachu che yim na manan che yim buzarak che yimo kor wintan vaccine tim karen timan bachan man se ye da am so chun gasan ki atman chu chu khof bigatan. Drenched in water, in snow and harsh weather conditions, but they don't give up on their mission. Snow and freezing cold are not a deterrent for these dedicated frontline COVID warriors. They go door to door to vaccinate those who are unable to reach the COVID vaccination centers. They are primarily targeting the old and infirm who cannot reach the vaccination centers in snow and biting cold. Clearly, nothing can stop the health workers in Kashmir in their battle against COVID third wave for getting everyone vaccinated.
पैदल क्या सन मजबूरी करान हाँ हल कत पे करान क्या करान शिनस मज पैदल योत ना वक्त गाड़ खसान वक्त खसन हम यहाँ सकड़ा साइड पर रोज़ सैंपलिंग करते हैं। यहाँ पर RT-PCR भी होते हैं और रैट भी होते हैं। तो यहाँ से जो भी लोकल या नॉन लोकल गुजरता है हम उनका सैंपलिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी आते हैं। हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप होम आइसोलेशन लीजिए। तो जो नेगेटिव आते हैं तो ऐसे ही जाते हैं, लेकिन सिम्प्टोमेटिक भी बहुत सारे आते हैं तो उनको भी बोलते हैं हम। जब वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको बोलते हैं आप होम आइसोलेशन लीजिए। तो हमारे बेमू सर ने एक टीम बनाते हैं, फिर वो होम विजिट करते हैं उनको कि वहाँ पर देखते हैं, उनको वो मेडिसिन देते हैं। एजिथ्रोमाइसिन क्या भी होता है उनका कोविड किट, वो भी फैसिलिटी होती है उनके लिए। तो जो डबल वैक्सीनेशन आते हैं, डबल वैक्सीनेटेड लोग आते हैं बाहर से, वो भी बहुत सारे पॉजिटिव आते हैं। तो उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप होम आइसोलेशन लीजिए। For the patients who tested positive on RAT or RT-PCR, we used to advise them home isolation, and we will be in constant touch with the patients telephonically, as well as our teams would visit those patients, check their saturation and provide them any medicines if needed. Those who were mild, patients who developed hypoxemia, who needed oxygen, for them we have a dedicated COVID ward in our hospital where oxygen facilities are available and medical officers are posted round the clock. Fortunately, during this third wave of COVID, we did not need to admit any patient, as I was saying, because of this efficient and thorough vaccination drive. Most of the cases were only of mild nature, mild severity. They just needed symptomatic management, reassurance, and some just basic care. And they used to be in touch with us through telecommunication. जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, जो हमें गिवन टारगेट था वैक्सीनेशन का, वो हमने 100% अचीव कर दिया, जिसमें कुछ मुश्किलात भी आए। विंटर का टाइम था और ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़ भी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स ने मेहनत करके वहाँ पहुँच के उन सब लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। तो जो अभी 15 to 17 जो हमारी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, उसमें हेजिटेंसी पहले थी, लेकिन वी हैव ओवरकम इट और हमने वो भी टारगेट अचीव कर दिया। और इसके साथ साथ पॉजिटिव भी लोग आने लगे, लेकिन इसमें थर्ड वेव में एक ऐसा था कि इसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, उसके चेस्ट वगैरह जो है, जिसको हम छाती कहते हैं, वो ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई इसमें। और इसके सिम्टम्स माइल्ड थे, चूँकि लोग वैक्सीनेटेड थे, 100% टारगेट हमने अचीव किया था, तो उससे सिम्टम्स जो भी थे माइल्ड ही थे सबके। हॉस्पिटलाइजेशन ऑलमोस्ट नील के बराबर नहीं हुई, मतलब क्रिटिकल कोई नहीं हुआ। तब भी हमने वार्ड एक बना के रखा था यहाँ पे, जिस पे ऑक्सीजन की भी फैसिलिटी थी, और वहाँ हम लोगों को जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आते थे उनको हम हैंडल करते थे, इन केस अगर कोई वैसा वहाँ होता था। अब जहाँ तक हमारे बाकी जो जनरल कोविड पेशेंट्स आते थे हमारे पास पॉजिटिव होके, जो माइल्ड सिम्टम वाले होते थे, तो उनको हम होम आइसोलेट करते हैं। हमारी टीम वहाँ जाती है, रैपिड रेस्पॉन्स टीम हमने बनाया, टेली कंसल्टेशन भी देते हैं, उनको हम घरों में मैनेज करते हैं। कोविड किट्स आते हैं हमारे पास, जिसमें कुछ मेडिसिन होती हैं, ऑक्सीमीटर वगैरह भी होता है। एहतियात के तौर पे हम उनको घर में ही होते देते हैं। उसके बाद फिर हम उनको होम आइसोलेट कंप्लीट करते हैं। हमारी टीम भी उनको विजिट पे जाते हैं और देखते रहते हैं। During the drive, over 680,000 people shall be administered the booster doses, including 400,000 frontline workers. Jammu and Kashmir is soon expected to achieve a target of 100% vaccination of its adult population.
The Union Territory already administered the first dose of the vaccine to 65% of its population in the 15 to 18 age group. Kashmir has achieved the target of 100% COVID-19 vaccination in the 15 to 18 age group for the first dose in Ganderbal, Shopian and Anantnag districts. Government has announced a weekend lockdown in Jammu and Kashmir to contain the spread of COVID-19 and has imposed restrictions on non-essential movement during this time. But thanks to the unrelenting efforts of the health workers of Jammu and Kashmir, which has helped to contain the spread of the virus, clearly they are the unsung heroes who are putting their duty before anything else in the battle against COVID. Health workers in Kashmir are working round the clock, braving snow and sub-zero temperatures. They are going to remote areas and making all the efforts for vaccinating people. Clearly, in the fight against COVID, they are leading the way. That's all we have in today's show. Thanks for watching. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.